Hello everyone, welcome back to PrepFusion. We're live. Himanshu sir also will be joining in just a second. Just for a second, turn this off. I'll be sharing it in the Telegram group. Just give me a second. Share कर दिया already. Yeah, hi. How's the preparation going? So are you guys watching the revision videos? You have to practice more questions, Balaji. You have to practice. Like in my revision series, I'm doing few gate POQs, right? You can solve those. In my revision RPOK series, I'm solving POQs along with me. You try to solve those questions, then you see my solution. Should I go for look whatever you're comfortable in, right? If you're more comfortable towards coding, then you can go with CSC. CSC also has great opportunities. If you want to excel in that domain, IT domain, you go with Gate CSC. Yeah, so tomorrow we are going to conduct our first AIMT. Okay, the name of the AIMT is Concept X. Okay, yeah. So everyone should write it down, no matter whether you have completed one subject or two subjects, whatever that you have completed. If you have studied on the semester level as well, you should write down and see your level, where do you actually stand, okay, and how many questions you are able to solve. So write down, no matter whatever the subject you have completed, just see yourself that in a full length paper, how would I perform? Okay. मेरा लैग हो रहा है या तेरा लैग हो रहा है? किसका लैग हो रहा है? लैग कोई बोला क्या लैग हो रहा है? नहीं मेरा नहीं, तेरा वीडियो लैग होकर थोड़े से आ रहा है, तो शायद मेरा इंटरनेट कनेक्शन होगा. ठीक है, तो Yeah, Pawan, you should go for tomorrow. You should go for Concept X. Okay. Revise. Darshan, you have to revise. Every time you have to revise. देखो JEE is more difficult. JEE is not more difficult, no doubt about it. JEE doesn't even come close to that. We just came live in a short notice. So yeah. And How Pawan, is it will be available in Titan's Watch for longer time as well. Don't worry about that. But I would suggest to write down tomorrow. Okay. yeah, tomorrow at I would least you suggest. write down and see where you like it, what are your weak areas, where you need to focus. Like you will be able to understand like where you need to focus basically. Yeah. So you guys can ask your queries. Like tomorrow's paper, mostly it will focus your conceptual understanding. Like whatever the kind of questions that can be asked in the gate examination, those questions we have framed. It's not that whatever that has been asked. PYQs, like taking the reference of PYQs, we frame the question. That will not happen. Like tomorrow's paper will be one of the finest paper, I can tell you. It would be one of the finest paper that you would see. Okay. Yeah, लक्ष्य स्ट्रैटेजी क्रिकेट फैन देखो पढ़ने से होगा, ठीक है. ईडीसी एमएफटी डिजिटल एनालॉग टाइम में कैसे कवर करना उसको पढ़ने से होगा. बात यही है. मैं बता दूं, आप ये टॉपिक कवर कर लो, ये मत करो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, तो ये वो टाइम नहीं है सितंबर. वो टाइम आता है दिसंबर में. अभी पूरा करो आप, ठीक है ना. ईडीसी कॉम्प्रिहेंसिवली करो, ईएमएफटी कॉम्प्रिहेंसिवली करो. अगर ईसी की हो तो एनालॉग और डिजिटल भी कॉम्प्रिहेंसिवली करो. अगर इलेक्ट्रिकल की हो तो फिर एनालॉग डिजिटल को लाइटली ले सकते हो, ठीक है ना. तो थोड़ा मतलब अभी ये समझ सोचो कि स्ट्रेटजी क्या है. स्ट्रेटजी है पढ़ना कॉम्प्रिहेंसिवली. ये स्ट्रेटजी और ये सब मजाक होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है. व्यूज लेने के लिए वीडियो बनाई जाती है इन सबकी, और हम कुछ भी नहीं. लेते हैं, हम भी हम भी 150 लेते डेज हैं स्ट्रेटेजी लेके आते हैं. 150 डेज ऑब्वियसली, लेकिन अभी बढ़िया से करो पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली, बढ़िया से. देखो लक्ष्य, मैं आपको बोलूंगा यार, एनालॉग डिजिटल तो ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है. एटलीस्ट अब मेजरमेंट का एक मैराथन, 2 मैराथन है मेरे यूट्यूब में, वो 2 मैराथन देख लो, ठीक है.
मेजरमेंट का मैराथन 2 है मेरे यूट्यूब पे, वो देख लो। और ईएमटी का भी वेटेज आ रहा है यार, मतलब 4 मार्क्स का 3 मार्क्स का पूछ ले रहा है ईएमटी। तो मतलब पूरा आप मतलब आपके ऊपर है, आप छोड़ना चाहते हो तो, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब ऐसा है कि अभी तो सितंबर एंड है, अभी टाइम है ना आपके पास, यू हैव टाइम लक्ष्य स्टिल। पीवाईक्यू से कौन सा बुक प्रेफर करना चाहिए यार? गेट एकेडमी का एक बुक है, वो ठीक है यार। वो ई बुक है, हार्ड कॉपी तो नहीं है, ठीक है पीवाईक्यू के लिए। बाकी एस एकेडमी, मेडिजी, इन सब के कोई भी बुक ले लो यार पीवाईक्यू का। सवाल तो तुम्हें ही सोल्व करने हैं, और जो रॉन्ग सॉल्यूशन है वो सब में रॉन्ग है, उसकी सॉल्यूशन हम ले हाँ, आते हैं यूट्यूब पे। श्वेत दर्शन देखो, आपको नेटवर्क थ्योरम में तो कुछ याद करने का है ही नहीं, मतलब इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं। नेटवर्क थ्योरम में याद करने का क्या है, 4 तो थ्योरम है। नॉर्टन थेवेनिन तो एक साथ है, और सुपरपोजिशन तो समझ, नाम से ही समझ में आता है क्या है सुपरपोजिशन। तो याद करने का क्या है उसमें। Unable to solve most of the company's evacuation या full digital playlist I want to do। डिजिटल प्लेलिस्ट आपने कहाँ से पढ़ा यार? यूट्यूब पे मैंने पूरी तो डाली नहीं है यार। पढ़ लिया होगा फिर भी नहीं हो रहे सवाल सोल्व। तो मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के तो एटलीस्ट हो जा रहे होंगे यार, या वो भी नहीं हो रहे? देखो डिजिटल में और सी दूसरी चीज भी पूछ लेते हैं ना वो लोग, तो हाँ, सीओबी भी पूछ वेरिलॉग लेते वगैरह हैं, पूछे, सीओए वेरिलॉग पूछ वगैरह पूछा लेते है, तो हैं, उसका तो आपको अलग से अलग है पढ़ना ना। पड़ेगा। Vignesh, for an EC student, yes, that is enough. For an EC student, I will say that video is enough, Vignesh. For an EC student. वेरिलॉग के लिए देखो, अनीश सर ने पढ़ाया है एकदम बढ़िया से। हाँ, पढ़ बाकी सकते हो। एनपीटीएल का एक एनपीएल के बारे में तो उनका पता भी ही है, है। उनका नाम क्या है, मैं भूल गया। उनका नाम क्या था? अरे क्या नाम था, मैं भूल गया। वो आईआईटी गुवाहाटी का प्रोफेसर है उनका। मेरे प्लेलिस्ट, मेरे एक सर्च मारो, डिजिटल व्हील रोड मैप, जस्ट सर्च डिजिटल व्हील रोड मैप अनिशा, देयर आई हैव मेंशनड लाइक व्हाट आर द फ्री रिसोर्सेज। आई हैव मेंशनड द पेड रिसोर्सेज एज वेल एज द फ्री रिसोर्स। देखो दर्शन, देखो देयर आर सो मेनी, लाइक you just practice a gate POQs, no? You just practice a gate POQs. You have so many variety, like common branches, EECIN. You'll never be able to finish the gate POQs of common branches. हाईएस्ट मार्क्स मैं 60 एक्सपेक्ट करूंगा यार, 60 से ऊपर नहीं आएंगे मेरे ख्याल से, अगर कोई चीटिंग नहीं किया तो। अनलेस चीटिंग कर लिया वो बात अलग है, लेकिन आई गेस 60 वुड बी द हाईएस्ट फॉर टुमारो। 60 व्हाट डू यू थिंक भी, अनीश? हाँ, 60? मेरे को या लगता है 60 50, हाईएस्ट, लाइक 50, समवन लाइक, मेरे को 50 if लगता है। someone like Raja Bhaiya is coming into action, then he can score, right? हाँ, वो कर सकते हैं यार, लेकिन मेरे तो को लगता है यार 50 होगा। 60 मार्क्स हाईएस्ट आई वुड एक्सपेक्ट। मेरे को तो 50 55 ऐसा कुछ। अब चीटिंग हो गया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता उस पर, चीटिंग हो गया तो मैं कुछ नहीं कर हाँ, सकता। ईएमएफटी नहीं, ईएमएफटी में अक्टूबर में नहीं आई, ये सब दिसंबर में आएंगे। ईएमएफटी पूरा यूट्यूब पे करवा रखा है फ्री में, अगर कॉम्प्रिहेंसिवली करना है तो पूरा यूट्यूब में फ्री में करवा रखा है। लास्ट में मैं एकदम वो सब बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक कर सकते हो, ठीक है, ये कर लो, ये मोर इंपॉर्टेंट है। अब वहां पे कोई गारंटी मैं ये नहीं दूंगा कि इसी से सवाल आएगा, लेकिन मोस्टली पीवाईक्यूज में इसी से सवाल आया है। कुछ वीडियो की शॉर्ट वीडियोस में बना दूंगा कि इनको इनको जल्दी में ऐसे कर सकते हो। तो बेसिकली वो एक इस तरह होगा कि मतलब अगर 10 एक नंबर के सवाल आ रहे हैं एग्जाम में, तो 5-6 नंबर आप कैसे ले सकते हो। तो इस तरह का आएगा, वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं आएगा। ईएमएफटी ऑलरेडी बना दिया मैंने, ईएमएफटी कॉम्प्रिहेंसिवली यूट्यूब पे, ठीक है। बाकी ये सब करो, एनालॉग ईडीसी डिजिटल करो, बढ़िया से करो। डिजिटल सबसे पहले ले लो, उसके बाद ईडीसी ले लेना, उसके बाद एनालॉग कर लेना, ठीक है। डिजिटल ईडीसी एनालॉग ये ऑर्डर रख लेना, या फिर डिजिटल एनालॉग ईडीसी ये ऑर्डर रख लेना। डीपीपी स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट पीवाईक्यू टॉपिक वाइज टेस्ट देना सही है एज ड्रॉपर स्टूडेंट। इसी ड्रॉपर स्टूडेंट है यार, डीपीपी मत स्किप करो यार, ठीक है। डीपीपी वगैरह मत स्किप करो, बढ़िया सवाल होते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, No, बढ़िया बात। do we really need to, Balaji? In my honest opinion, actually, no. Like you'll never get the time. Like already the educators, they already solve the standard question. They already pick up the good questions, right? So whatever educators are teaching in any coaching institute, that is, I think that is enough. Okay. Vignesh, you are saying that you are not able to focus in one subject. How are you thinking that you will be able to focus in two subjects in parallel? Okay. So try to first keep your focus in one subject. If you think that okay, if I take two subjects, I will be able to focus, no, that will be even more difficult. कितना percent? Maths, I think for maths there will be around Anish, 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 let's not reveal anything. okay, Let them write down the paper. okay, 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 yeah, just yeah. go to the paper directly. That's it. No, nothing. Okay, okay, yeah. No, surprise, guys, surprise. यार कल मैच नहीं देखेंगे भाई, कल जानबूझ के उसी टाइम पे लाइव आऊंगा मैं, भाई, ठीक है। कल मैच नहीं, मैथ्स तो होना भी नहीं चाहिए, मैथ्स तो होना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, जो करवा रहे हैं, कल मैच नहीं देखेंगे। मैथ्स तो होना भी नहीं चाहिए। और उसी टाइम लाइव भी आएंगे, और दूसरी बात वो अपना टाइटन मैच वाला सेशन भी रख लेंगे कल। कल है या फिर नेक्स्ट है? कल नहीं है ना, नेक्स्ट कल नहीं नेक्स्ट है, है, नेक्स्ट 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 सैटरडे है, कल तो हो हाँ। गया ना, तो यूट्यूब पिछले पे हफ्ते हो लाइव आ गया ना। जाएंगे।
यूट्यूब पे कल लाइव तो आ यूट्यूब ही पे लाइव आ जाएंगे। जाएंगे। कब आना यूट्यूब लाइव कल? कल यूट्यूब लाइव पेपर होने के बाद, मतलब 8 बजे मैच स्टार्ट होगा तो 8 बजे आ जाएंगे। हाँ ठीक है। मैच नहीं देखने देंगे भाई किसी को भैया। देखो नीडलेसली गंभीर से एक्सपेक्ट ही नहीं था यार ये। चलो ये लेआउट का बता दे यार थोड़ा सा, एनालॉग लेआउट और मेमोरी लेआउट में क्या स्कोप है भाई? नहीं वो नहीं पूछ रहा। वो पूछ अच्छा ये अच्छा मेमोरी पुष्पवंत पता नहीं पुष्पवंत यार। पुष्पवंत अच्छा पुष्पवंत, व्हाट इज द स्कोप? Scope is good. Okay, what is the scope? Scope is good. Analog layout scope will always be there because it is very difficult to automate analog things. Very difficult to automate analog things. So scope is good. gave exam in 2020, scored 38 marks, currently focus on more and more revision. Thanks for response, I will prepare MFT and major exam. हाँ yes Yeah, yes yes. okay. Absolutely. सर का यार वो अचीवर वो कैंपस अपॉर्चुनिटी थी यार, ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी थी, ऑफ कैंपस नहीं हुआ किसी का, ठीक है ना? नहीं ऑन ऑन कैंपस थी कैंपस वो, से बोल टीयर रहा है 3 वो नहीं था। सर। टीयर 3 कॉलेज है ना इसलिए वो पूछ रहा है वो ऑन कैंपस ही तो होता टीयर 3 नहीं था वो कहते हैं टीयर 3, सभी अपने कॉलेज को टीयर 3 बताते हैं। है। अच्छा मेरे को पता जब नहीं था। अच्छा ओ टीयर 3 नहीं है, टीयर 3 नहीं है, ऑन या कैंपस अपॉर्चुनिटी थी। Prakash, like yeah, I like I'm thankful that those notes are helping you. Like that is what how we teach in full course. Like I hope you're able to understand what kind of level we teach in full course. इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का मैच कल है क्या? इंग्लैंड साउथ अफ्रीका मैच कल हुआ था यार। बढ़िया हुआ था, मैं देख नहीं पाया क्योंकि मेरे पास सोनी लिव अच्छा नहीं था। कुछ तो था मतलब कुछ तो T20 या क्या था कुछ तो 300 मतलब रन वो। बन गए थे, 300 300 300। अच्छा डेल कंपनी। आपको ये मत कहना कि सर क्रिकेट खत्म हो गया है, टेस्ट मैच इज द ब्यूटी। जो लोग ये बोलते हैं ना कि टेस्ट मैच इज द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, वो कभी टेस्ट मैच नहीं देखते। ठीक है, वो कहते हैं नहीं T20 नहीं क्रिकेट खत्म हो वो गया। वो टेस्ट मैच तभी देखते हैं जब वो पंत जब हाँ आता है ना ऑस्ट्रेलिया में हाँ, तभी वो देखते हैं। जब वो मैं तेज भी मारता है तब देखते हैं। हाँ, मैं और भी वो वैसा ही चार हूँ फील्डर अगर भाई। लगा दिए, मैं तो कल हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा। चार फील्डर लगा दिए ना अगर पास में, तो उसका स्क्रीनशॉट डाल के कहेंगे दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट है। अगर टेस्ट क्रिकेट में ब्यूटी होती है तो कभी T20 इंट्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, अगर किसी चीज में ब्यूटी होती है तो कोई और चीज इंट्रोड्यूस नहीं होती। जैसे प्रेप फ्यूजन के बाद कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस होगा ही नहीं ऐसा 2-3 नहीं साल में। तो ऐसा वही होता है, किसी नहीं। चीज में ब्यूटी होती है ना तो कुछ और नहीं आता, नया नहीं आता। व्हाट्स तो योर टेस्ट क्रिकेट अच्छा है लेकिन ब्यूटी नहीं। सर व्हाट्स योर मोटिवेशन फॉर लाइफ? सर व्हाट्स योर मोटिवेशन फॉर लाइफ? अरे अनीश, पहले वो स्लिप साइकिल वाले से जवाब का आंसर दो। कौन सा? सिर्फ स्लिप अच्छा साइकिल, अच्छा। हाउ टू मेंटेन द स्लिप साइकिल। देखो look, Himanshu would not be the right person to answer and just so you have to give priority to your sleep. So whatever the task is, if you are thinking of sleeping at 12 p.m. sleep at that point. Whatever the task is, you delay it to the tomorrow or something, right? Sleep at a proper time, wake up at the proper time. That's how you can improve your sleep cycle. Okay, sleep at a proper time, wake up at a proper time. शिवम शिवम, आपने जो पीवाईक्यू बोले हैं वो बढ़िया है, सफिशिएंट है, लेकिन 70 प्लस मार्क्स आ जाएंगे ये नहीं, मैं नहीं बता सकता। ठीक है ना, पीवाईक्यूज बोले हैं वो सफिशिएंट है, अब 70 प्लस मार्क्स तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मोटिवेशन ऑफ लाइफ सांस लेना ही है भाई। अगर सांस ले रहे हैं तो पढ़ना है तो मेरी काम तो भी करना मोटिवेशन जा रही है भाई। You guys are not watching the RPOK videos. My motivation is dying. Okay, you guys are not watching it. कोई good match. Can I? है। मिश्रा, एज ऑफ नाउ आई एम नॉट श्योर वेदर इट विल बी अवेलेबल फॉर लेटर ऑन, बट वी कैन सी। शर्मा ब्रो, पढ़ाई नहीं हो रही यार। ब्रो बोलोगे ऐसे और बोलोगे पढ़ाई नहीं हो रही तो नहीं होगी भाई। ठीक है, कैन आई प्रिपेयर 3 सब्जेक्ट्स फॉर गेट 2026 फर्स्ट अटेम्प्ट इन थर्ड ईयर? हाँ, Yeah, ये बढ़िया whatever. डिसीजन है, इट वुड बी अ Hmm. गुड डिसीजन। 3 But सब्जेक्ट्स in a 4 good सब्जेक्ट्स ओनली यू। prepare those in a good manner. But do attempt the test tomorrow. Okay, make sure you attempt the concept X test tomorrow. Yeah, Madhu, if you are able to solve 75% of the PYQs in a manner that I suggested, then it is pretty good. Very, very good you are doing. 25% it will improve with time. Don't worry. With the time, it will improve. When you study a subject, let's just say I have studied digital electronics as of now. So whatever the knowledge that I am having currently, it will surely improve till the end of examination. With the time, subjects will improve. Even if you are studying the next subject and you are revising the previous one, then also it is improving. When you revise it again, when you write down the test series again, with the time, everything keeps on improving. So surely it will improve. Don't worry about that. 75% is very, very good. अरे कोई ले ऑफ नहीं हुआ भाई, छोड़ के आए थे अब।
क्यों छोड़ी, क्या छोड़ी, उससे आपको क्या करना है बता दिया मैंने वीडियो में आके, ठीक है। और अगर आप IIT के एमटेक VLSI स्टूडेंट होते तो अपने रियल नेम से आते हैं आप, ये बाई शैंक क्या होता है, रियल नेम से आओ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कैसे करो प्रखार once you study the rectifiers from me on YouTube I think the rectifier single phase rectifiers is completely covered Prakhar on our playlist Power Electronics you can cover the rectifiers from me okay you will not feel weak. Can I complete maths and control RPYQ for EC? Anish Arsh is asking maths and control from RPYQ for EC. Can I complete? Yeah maths and control will come but I am not able to see your maths and control will come definitely maths and control will come. कहाँ पे है वो गाड़ी ऊपर चली गई होगी। ऊपर चली Is गई there any part definitely. to revise the subject in revision time or else randomly revise the subject in EC? Is there any part to revise the subject in revision time? Any path? I did not get your query. Like नहीं revise I the think he's notes in a asking sequential manner, right? I think he's Start right asking from the revision strategy, how to revise or something. Like, okay, he's asking which thing to revise first, which subject to revise first, or something like basically the sequence. West Can I? Bengal, I am a student third semester, completed NT continuous portion of signal system, half of both control systems and digital electronics, 100% of EDC. By this one, suggest me good practice resource. Good Tomorrow practice is it? resource PYQ. Tomorrow is PYQ, and tomorrow we are having a test. So make sure you attempt that test. That will be a good practice Yeah, resource. since you have completed network theory, signal system, control system, digital electronics, so EDC also you have completed. So tomorrow you try write down the test. Okay. Tomorrow you try writing down the test and practice resource are PYQs and test series. And DPP is whatever the educator gives you. That is good enough. As of now, there is no plan that we will extend the window, but we can Window. extend the So window based on the based on the request. We are talking about AIMT that is going to be taken place tomorrow. Okay. किस टेस्ट Which की is बात better, हो रही है? attempting test for नहीं weekly नहीं revision versus PYQ? IC class Anish, your tomorrow we are video is having a free lagging. test. Okay, free AMT all. My video is lagging. यही problem है ना. You can try rejoining. Share details. You go to YouTube channel. You go to our YouTube channel. There I have completely shared the details. What all things are there. So you go to our YouTube channel, watch the video. Title would be Concept X by PrepFusion, All India Mock Test. So you will get the video there. Which is better, attempting test for weekly revision versus attempting PYQs? If you are able to do the PYQs in a very good manner, then you can write down the test series. First, you need to do the PYQs. If PYQs are done, then you can write down the test series. What is the sequence of subject to revise in revision time such that interlink between subjects can make easy? Look, network analog you can revise together. Digital you can take separately. Signals and control you can revise together. Mathematics is basically problem solving only. So you take mathematics also separately. Aptitude you will not revise. And coming to EDC, MFT and communication. So after revising signals, you can revise communication, EDC separately, EMFT separately. So this could be the order. And whatever that you have studied, that you need to revise. So don't think of order. If I have studied digital electronics, then I will revise digital electronics. If I have studied control system, I will revise control system. But if you have studied everything and you are thinking of some order, then this could be the order. Atharu, bataya na yaar. As of now, there is no plan that we will be extending the login window. Login window is there from 2 p.m. to 6 p.m. Okay, but if a lot of student would be requesting, then we can extend the window. Solution will always be available on YouTube. Solutions will come on YouTube. That video will always be available. Abel, as of now, you need to study. Okay, once you have studied, once you have done your
Once you are done with your gate examination, then it would be good enough. You can build up the problem solving skills, you can build up the thinking ability as well. But first focus on gate examination rather than anything else. Okay. Final year EC student completed digital electronics, network theory and mathematics will be covered within a week. What should I do to do best in this attempt? Just keep on studying the way you are studying. 2 subjects are completed. That is like now you can study, like you can complete 7 to 8 subjects. So keep on studying. By the end of December, you try to complete 7 subjects, which are non-core subjects, we call it. So try to cover those non-core subjects, and after that we can see from the core subjects you can do something pretty good. Okay, so keep on studying the way you are currently studying. I had my TI interview 3 days away from the yeah. No worries, Divyam. No worries. It happens. It happens sometimes. It happens sometimes. No worries. Best of luck for your future. You can do surely something well. Don't worry about that. Yeah, I will try to extend. Dilip, I will try to extend. Don't worry. Prakhar Sharma, I will upload. Near gate examination, I will upload. यार भाई शंख, पहले तो आप नाम सही रखो, ठीक है ना? और भाई शंख, क्या क्या स्किल्स डेवलप करनी है इसके लिए वीडियो है, आप देखो रोड मैप टू VLSI बाय बाय हिमांशु अग्रवाल और बाय अनीश शाह और बाय एनी अदर यूट्यूबर, बहुत सारी वीडियोस है। और आप ऑलरेडी IIT के में हो, आप बता रहे हो, तो आपके सीनियर्स है ना वहाँ पे, वो ऑलरेडी 2 साल हो गए उनको वहाँ पे, दूसरा साल उनका चल रहा है। IIT के का करिकुलम, IIT के प्रोफेसर, IIT के आपके इवन जूनियर्स बीटेक वाले जो VLSI पढ़ते हैं, दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर इनफ गाइडेंस। आपके पास गाइडेंस की कमी है ही नहीं अगर आप IIT के में हो तो, IIT कानपुर में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है गाइडेंस की, दिक्कत केवल पढ़ाई की हो सकती है बस। तो वो पढ़ाई स्टार्ट करो, बस बात खत्म, ठीक है? अब इस वीडियो में मैं हर सेशन में मेरे पास एक क्वेरी आती है कि क्या क्या स्किल्स डेवलप करने चाहिए, अब वो हर सेशन में थोड़ी बताऊंगा मैं, वीडियो बना के रखता हूँ मैं इन सब की। तो ये तो बहुत कॉमन क्वेरी है कि स्किल्स क्या चाहिए VLSI डोमेन के लिए, तो उस सब की वीडियो है मेरे से ही, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो मेरे से ज्यादा टाइम से हैं इंडस्ट्री में, Rashima उनको is ज्यादा still बेटर not बताऊँ। late. Arsh, test series, attempt the test series. हाँ हाँ, रूड बहुत हूँ भाई मैं, रूड बहुत हूँ यार, वो तो हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं स्टोरी टॉक्स करके आराम से आपको बोल दूंगी ये पढ़ लो, तो आप पढ़ लोगे? अब मैं थोड़ा सा रूड होके बोला हूँ तो शायद आप पढ़ लोगे, ठीक है, जवाब होने के लिए। तो मेरे को किसी की नजरों में अच्छा नहीं बनना है यहाँ पे। टीचर का टारगेट होता है कि उसे उस जो उसका स्टूडेंट है उसका करियर बढ़िया बनाया जाए, ना कि उसके साथ स्टोरी टॉक्स की जाए या फिर बातों में उलझाया जाए, ठीक है? तो रूड तो हूँ मैं, रूड दिखता हूँ, सामने से रूड पक्का दिखता हूँ मैं, कोई उसमें डाउट ही नहीं है। बाकी किसी और सेशन में जाके इतनी सारी क्वेरी लिखो, कोई ले तो सेशन में, लोग लाइव आके केवल टाइम पास करते हैं, क्वेरीज नहीं लेते हैं, ठीक है? तो बाबू कहीं और जाओ आप, या ये प्लेस आपके लिए है नहीं। My syllabus is completed. Yeah, more than enough. Satrajit Datta, more than enough. 5 months are more than enough for revision everything. हाँ शंख, दिख रहा है यार, आप IIT के में हो गया, दिख रहा है सब। I'm BTech 5th semester in a tier 3 college, starting my gate preparation. How to be consistent? I'm doing senior system now. Consistent, if you keep on studying, you will be consistent on your own. Okay? If you study, you will be consistent. If you don't study, then you will not be consistent. So keep on studying. That's it. This is the only strategy to become consistent. That is, keep on studying. Okay? Otherwise, one more video I have made, how to be consistent and dedicated in your preparation. Somewhat this kind of title is there. So there I have told some strategy as well. That when you wake up, what you can do. These kind of things also I told.
But if you study, then these kind of things will come into action on its own. If you don't study, then you will not be able to, you will not be consistent. Okay, so yeah, that's the thing. Otherwise you can watch the video as well. बेस्ट पॉसिबल सब्जेक्ट सीक्वेंस, यार सब्जेक्ट सीक्वेंस वगैरह ये सब बना दिए वीडियो यार, देख लो, ठीक है। बेस्ट पॉसिबल सब्जेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, या फिर कैसे प्रिपरेशन करनी है, इन सब की वीडियोस देख लो। रोड मैप टू गेट ऐसा लिख दो, प्रेफ्यूजन हिमांशु अग्रवाल, वीडियो मिल जाएगी, वहां से सब्जेक्ट सीक्वेंस सब कुछ बताया हुआ है, वो सब देख लो। हाँ, आरएफ वगैरह के लिए मैं यार देखो, अब पर्टिकुलर कंपनी क्या पूछती है आरएफ में, ये तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है अर्श। मतलब कि मान लो कोई इंडस्ट्री आ रही है आपके कैंपस में रिक्रूट करने के लिए, तो आरएफ में आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगी, तो वो नहीं पता यार, वो उनकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। लेकिन एक जनरल इंटरव्यू में या फिर मास्टर्स में जाओगे एडमिशन लेने, तो आरएफ में क्या पूछा जाता है, उन सब के लिए मैं कंटेंट इस साल बना दूंगा मार्च में, और थोड़ा सा ऑलरेडी अपलोडेड है, ट्रांसमिशन लाइन, स्मिथ चार्ट, वो सब ऑलरेडी अपलोडेड है। तो किसी भी आरएफ के इंटरव्यू में अगर बढ़िया इंटरव्यू है तो स्मिथ चार्ट वगैरह पूछेंगे, वो ट्रांसमिशन लाइन वगैरह पूछेंगे, तो वो कर लो बढ़िया से, ठीक है। ऑलरेडी आपने गेट में पढ़ रखा है, फिर भी कर लो, क्योंकि एक बार थोड़ा सा देख लो प्रेफ्यूजन पे, ईएमएफटी का कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें, मतलब फील है स्मिथ चार्ट की, तो वो देख लो थोड़ा सा, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से एक दो कंपनी है हार्डली जो पर्टिकुलर आरएफ के लिए लेती है, और उसमें भी वो आरएफ पूछती है, आरएफ 10% पूछती है, 90% एनालॉग ही पूछती है। तो बाकी यार मेरे को एज सच कोई स्पेसिफिक कंटेंट नहीं है कि मैं ये पढ़ा सकता हूँ आरएफ में। IIT Hyderabad, I got entrance seat for, but I left it because I thought it is not good like VLSI, but now I am in a little regret. Don't regret as of now. If you have left it, then look, whatever the decision that you have taken, and if you can't go back, let's say I have taken a decision and now I can't go back there, then my focus will not be on the regret. My focus will be on what I should do next, right? What I should be doing next. That would be my focus. So what next you can do, you can prepare for GATE examination and do well, and next year you can get into a even better seat. You can get into a even better IIT with a even better seat. So this should be your next target. This is what you can do. Okay, so as of now, forget regretting. You have 5 months, utilize that 5 months and you can do very well. Fourth year DTU, what topic should I prepare for digital domain? यार भाई, यही सेम क्वेरी आप YouTube पे टाइप कर लो, पता चल जाएगा कि क्या टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं डिजिटल डोमेन के लिए, ठीक है। Atharv, 1 month before the examination, what you need to do, that video will come before the 1 month of the examination. As of now, 5 months are left, so don't focus on December or January, focus on September. How much marks is good for third year attempt in 2026? By good, what do you mean? By good, what do you mean? For some people 30 marks is good, for some people 50 marks is good, no, right? If you want a seat in IIT, a decent enough seat in IIT or in top 5 NIT, then in EC above 50 marks would be good, roughly around above 50 marks. If we see the trend of previous 6 years, if you have got above 50 marks, 55 marks in the previous 6 years, if you have got above 55 marks, then everything is good. And for BARC interview, I will do. For BARC interview, I will bring Harsh. Can you please guide me on how to plan my preparation effectively so that I can manage both without compromising either? Both what? So that I can manage with both. Both what? What do you mean by both here? Is communication doable? It is surely doable. Not scoring, it is not scoring, but you should do it. So do you think is it practically possible to crack GATE in 1 year? Yeah, it is possible. Everyone, a lot of people have cracked GATE during the college itself. यार ISRO इसी के लिए माइक्रो इंजीनियरिंग हाँ पढ़ना चाहिए। कहाँ से पढ़ना है एक बार ये आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दो। किसी लड़के ने प्लेलिस्ट सजेस्ट की थी और उस पे बहुत सारे लोगों ने बताया भी था कि वो बढ़िया है। तो आप ये वाली क्वेरी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दो। जिस बंदे ने पहले किया था ना सजेस्ट, वो वापस सजेस्ट कर देगा, ठीक है। या दिलीप, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर दैट। सर 2-3 स्मॉल वेटेज वाले सब्जेक्ट को छोड़ के सारे नोट्स कंप्लीट है, मगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के सब्जेक्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस किस सब्जेक्ट में कितनी, किस टॉपिक में कितना। क्वेश्चन प्रैक्टिस में यार देखो, किसी भी सब्जेक्ट को ज्यादा, किसी भी टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। सवाल अगर सामने आ रहा है तो उसका सवाल करो। अब जैसे मान लो कि
खैर आपको मिलेंगे ही नहीं, जैसे मान लो एनालॉग कम्युनिकेशन में एक PLL यूज होता है, तो आपको PLL के सवाल मिलेंगे नहीं गेट में, कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। हमारी टेस्ट सीरीज में मैं एक दो डाल दूंगा, बट वो कहीं नहीं मिलेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी कम हो गई। तो आपको कोई भी गेट रिसोर्स में अगर सवाल मिल रहा है ना, इसका मतलब उसकी उसकी प्रैक्टिस करनी ही है। ये मत सोचो कि ये हाई यील्ड टॉपिक है, ये लो यील्ड टॉपिक है, इससे इससे सवाल कम आते हैं, इससे ज्यादा आते हैं, कुछ भी आ सकता है। इन्फॉर्मेशन थ्योरी का इस साल 6 नंबर का सवाल आ गया, मेरे अटेम्प्ट में भी शायद 6 नंबर के सवाल आए होंगे। तो 2022 का अटेम्प्ट मिला लो और 2025 का अटेम्प्ट मिला लो, इन्फॉर्मेशन थ्योरी के सवाल 10 से ज्यादा मार्क्स के आ गए। और इन 2 अटेम्प्ट को छोड़िए, बाकी सब अटेम्प्ट में मिला के 10 नंबर के नहीं आए हैं सवाल। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? 2022 प्लस 2025 में इन्फॉर्मेशन थ्योरी के सवाल आए हैं 10 नंबर के मिला के, और बच्चे हुए जितने भी अटेम्प्ट है उसमें मिला के 10 नंबर के सवाल नहीं आए हैं। तो आप ये थोड़ी ना कह सकते हो इन्फॉर्मेशन थ्योरी की इंपॉर्टेंस नहीं। 2025 वाले अटेम्प्ट में बहुत हो गई ना। तो अगर आपको सवाल मिल रहा है मतलब उसकी इंपॉर्टेंस है, बात खत्म, ठीक है। Preparing for GATE, I was only started doing POK. Is it too late? No, it is not too late. You can surely improve your subjects. Just keep on improving your subject. It is not too late. Sir, I have done all subjects in bits. I feel I haven't done anything up to the mark. What should I do? Yeah, that's what I told you, Shreya. I told you in one of the not to you on YouTube only. I told that if you do the subjects in bits, that means you are not learning anything, and that is something you have matched up here. But still, you have time of 5 months. You have an idea of subject. What my recommendation would be, start the subject right from the zero again. Okay. Now it might feel overwhelming to you that sir again start from zero. Yes, you should start again from the zero because you have done everything in the bits. Start again from the zero. This time complete it, and once you have completed it, keep on revising, keep on solving the problems. Then move to the next one. Keep on revising the previous one. Keep on solving the previous problems of the previous one, and study the new one. Now it will take a lot of less time. Like let's just say when you did the subject in bits for 15 days, so now it will take only 5 days to complete one subject. So you have time. At least this is the time that you have realized. If someone asks the query that sir, I did not solve the PYQs, I just watched the lectures. So the same thing is happening with that particular person as well, that you guys just mashed up your subject. This is the bottom line, and first you need to admit it that my preparation is mashed up. Somewhere I have mashed up. Now you need to improve it. So improve it, start again from the zero. The one who has completely watched the lectures, now he can only solve the PYQs. Okay. And one who has just studied the subject on surface level in bits, then he should go start again right from the zero, complete the subject, move to the next subject, solve the PYQs of the previous one, then again move to the next one, solve the PYQs of the previous two subjects. In that manner you proceed. For the next 5 months you prepare in this manner, and surely you will get something good. Okay. Yeah, choose karo. Subhas, you need to choose whether you should go for IT placement or you should go for core. So if you have chosen one thing that you should go for IT placement, then you should prepare for that domain only. And if you have chosen to go for GATE examination, then prepare for GATE. Okay, that's it. Yeah, Rashmiya, what is your rank in that test series? What is your rank? Like 60% of the question is pretty good, I guess. So what kind of rank you are scoring? Based on that, I can tell you, because I was seeing the number of attempts. The number of attempts has been pretty good. Like you tell the test series and then you tell your rank. After that, I would be able to tell you that what is your performance. Okay. And I already told you that PrepFusion test series will be on the tougher side. So if you want to increase your confidence, then you can go to some other test series. But here the test series will be on the tougher side, no? Okay. So yeah. Can we learn a concept from YouTube and invest time in test series and get good marks? Yeah, that you can do. Rohan, you can surely do it. Yeah, Tanuj, you are on the right track. You are on the right track. Okay. Good reference book for signal system. Only one book is there, OpenM. Okay. For practicing, OpenM is a very good book for signal system question.
Sir, for which is... Sir, I am studying signal system now, but I am worried that I might forget it. How can I retain it? You need to revise the subject. This is how you retain a subject. Revise the subject. That's it. And Subhash, don't repeat your queries. Write it down only once. Okay? Write it down only once. Yeah, Rashmiya, 25 to 30 is decent rank. Okay? Decent rank, not that bad. So don't worry about that. Slowly it will improve. It is a decent rank, and take other test series as well. I would say take ACE Academy test series. So there you see your rank. It would be better. I'm pretty sure it would be better. Although the number of aspirants would be more there, but you will feel better. Here you might feel demotivated. For in PrepFusion test series, tomorrow also I'm going to take the test series. The level will be pretty good. Like no one is going to score above 50. That I can tell you. Above 50 will be very difficult to score. That's why I have given 200 minutes. So level will be very, very good. So that's the thing, no? Like if you want to increase your confidence, you can go to the other test series. So other test series I have already seen. I have seen that where they are lagging. They are lagging in framing quality problems. So that problem I wanted to eradicate. So that's why I made this PrepFusion test series. So if you are scoring less here, don't worry about that. No need to be demotivated. This is just for your understanding purpose. You increase your understanding. If you solve a particular question, you see that there is new concept involved. That's why I made the video solution as well. So video solutions are also there. So slowly things will improve. Don't worry about that. .2 CGPA is very good, no? 8.2 CGPA is very good. If you are able to get 8.2 CGPA by studying 3-4 days before the exam, then it is good. More than enough. Anything above 7.5 is enough. If you are getting above 7.5, enough. Okay. If you don't want to go abroad, if you want to do your masters in India only, then don't worry much about the CGPA. Above 7.5, everything is good. Okay. Above 7.5, everything is good if you want to stay in India for masters. If you want to do PhD, then your master's CGPA would be considered. So staying in India, 7.5 would be more than enough. Don't worry about that. रिवीजन 3 सब्जेक्ट हो गया ना, उनका करो. नेटवर्क, सिग्नल, कंट्रोल, उनका रिवीजन करो. साथ साथ में उनकी टेस्ट सीरीज भी करते जाओ, पीवाईक्यू भी लगाते जाओ. तो पहला ऑर्डर होता है कि सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना है, दूसरा होता है पीवाईक्यू लगाने, और तीसरा होता है टेस्ट सीरीज. तो अब आप कौन से फेज में हो वो देखो. आप सब्जेक्ट के नोट्स रिवाइज हो गए हैं तो पीवाईक्यू में चले जाओ. देखो आप मतलब कह रहे हो कि सिग्नल, कंट्रोल और नेटवर्क पूरा हो गया और अभी आप मैथ्स और मशीन कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट आपके नेटवर्क के नोट्स पूरे रिवाइज हैं और पीवाईक्यू भी हो गए हैं, तभी आप इतने सारे सब्जेक्ट कर सकते हो. ठीक है. सिग्नल के भी आपने एटलीस्ट नोट्स रिवाइज कर लिए होंगे. कंट्रोल का अब शायद आपने स्टार्ट किया होगा नोट्स रिवाइज करना. तो पहले वो नोट्स रिवाइज वाला जैसे ही फेज पूरा होता है ना, उसके बाद आप पीवाईक्यू में मूव करते हो और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज में मूव करते हो. और कुछ स्टूडेंट सब्जेक्ट के साथ साथ भी पीवाईक्यू करते हैं, वो भी ठीक है. ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट के साथ साथ भी पीवाईक्यू करो. तो ये वाला ऑर्डर है, आप देख लो कि कैसे रिवाइज करना है. बट टेस्ट देते जाना. ठीक है ना. टेस्ट देते जाना और करते रहना. मतलब कमांड में रखना हर सब्जेक्ट. ठीक है. Yeah, Rashmi. Yeah, thank you for that. Thank you. Sir, I'm asking, can I study simultaneously both my college exam and get tuition so that I can maintain 8+? Yeah, you can study simultaneously, but college exam preparation, look, whatever that is there in the college exam and whatever that is there in your gate preparation, some things will be common. 70% of the things will be common. So that you are already studying simultaneously, you know. How much is left? 30% is left. That you will study 3-4 days before the examination. And this is how you will complete your this is how you will complete your syllabus for gate examination. Along with that, your semester examination as well. So this is what I say. Before 1 week of the semester examination, don't care about the semester examination. This is what I say. At least when you are in third semester, fourth semester, and fifth semester, because third semester, fourth semester, and fifth semester syllabus will be inclined towards your gate syllabus as well. Whatever the syllabus you see in the gate examination, the same syllabus would be there in third semester, fourth semester, and fifth semester. So in that time, you need not you need not worry much about the semester examination. And once you are in sixth semester or seventh semester, then the pressure of syllabus will also go down, right?
Is it possible to master both analog electronics and digital VLSI in placement? Yeah, surely it is possible. Surely it is possible. Yeah, Rohan, you can start with the playlist. You can start with the playlist. Yeah, Rashmi, thank you for that. Keep on studying and best of luck. Yeah, it's good. It's good that Cadence is taking proper paper pen exam. So in paper pen exam, there is there is very less chance of cheating, right? Yeah. So if anyone is having any specific query means a query which is related personally to you only. So if you are having that kind of query, you can let us know. You can ask in the comment section. I will answer it. And tomorrow we are having concept X AIMT4 gate rankers, gate achievers, whatever you call it. So there we are covering all the non-core subjects. A very good set of questions you will be getting. So do attempt it. No matter whether you have completed one subject, two subjects, or three subjects, you should surely attempt it. Okay, you will get to learn a lot of new things, and you will get to see a lot of new concepts as well. So do attempt that question paper. Tomorrow Cadence exam through Pole Campus for design engineering. They said good understanding of tips, sir. I'm no, as far as I remember, you have been connected with us for a longer time, no? So you might have followed our content. That would be more than enough. So, and they are just saying network theorem RC circuit. So they will just ask network analysis only. So just revise our RC circuit notes, and that would be more than enough. Network theorems and everything you already know. Just revise the RC circuit, RL circuit notes, and that would be more than enough. Okay. Yeah, Shoaib, thank you for that. एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कल शोएब पहले मैराथन से भी एक दो सवाल आएंगे, सही करना उनको, मैं देखता हूँ सही कर पाते हो क्या. ठीक है, करना है सही. Analog electronics didn't get the confidence, always make the silly mistakes. Silly mistake, like you specify which kind of silly mistakes you are doing. First you specify that, sir, in this kind of problem I do this kind of mistake, then I can guide you. And if you are our paid course student, then you would be connected in our Telegram, you will be connected in our WhatsApp group, right? So on that group as well, you can tell that, sir, in these kind of problems I'm doing this kind of mistake, then I can guide you better. Like silly mistake is specific, no? Like even I do silly mistakes, right? You would also do silly mistake. So what kind of silly mistakes you are doing? And have the confidence on yourself. Confidence is very important. You would be able to solve everything. Okay, have the confidence on yourself. So, do you use any technique to reduce eye strains? यार मैं ये जो स्क्रीन का कलर ना, ये येलो रखता हूँ. ठीक है, स्क्रीन का कलर येलो रख सकते हो. ठीक है, आई स्ट्रेन के लिए जो स्क्रीन है ना आपकी लैपटॉप की, उसका कलर आप येलो रख लो. मोबाइल का कलर भी येलो रख लो, वो मैं रखता हूँ. क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा इशू हो गया था हेड में. इसी टाइम हुआ था लास्ट ईयर सितंबर में हुआ था शायद. तो मेरी मतलब आई साइड पूरी ब्लरी हो गई थी और हेड बहुत ज्यादा लाइट हेडेड फील करता था. तो फिर इसका कलर मैंने जब से येलो किया तो बेटर है. ठीक है, बाकी स्पेक्स वगैरह तो होंगे आपके, वो भी देख लो. स्क्रीन टाइम कम करने का ट्राई करो यार, जितना कम हो सके. मैं भी केवल कह ही रहा हूँ कम टाइम करने का ट्राई करो, लेकिन मेरा भी कम नहीं है. तो जितना कम हो सके उतना करो. खाली समय में बैठ के रील चला लेते हैं अपने, मैं भी चला लेता हूँ, बताओ. तो यही है ना. 7 सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, एबल टू सोल्व 60-70% ऑफ द क्वेश्चन. नहीं यार, एग्जाम वगैरह का मत सोचो. ठीक है, जितने ज्यादा फुल एंड टेस्ट दोगे ना, उसके बाद हो जाएगा कि फुल एग्जाम में कुछ भी आ गया तो मैं कर लूंगा. ठीक है, कल वाला पेपर देना बढ़िया से, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कुछ भी आए तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना. तो एग्जाम वगैरह का सोच के डरो मत, क्योंकि 95% आपका कॉम्पिटिशन वहीं खत्म हो जाता है एग्जाम का स्ट्रेस देख के. तो आप ये सोचो कि मैं उस 10% में लाई करूंगा,
बाकी लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं एग्जाम के बारे में सोचिए, बाकी लोग टेंशन लेंगे, बट मैं नहीं लूंगा, तो शायद मैं बेटर कर सकता हूँ। ठीक है। सर फॉर एनालॉग हाँ हाँ, सफिशिएंट, नागावंशी सफिशिएंट, इट इज सफिशिएंट। Sparkle, I don't have any suggestion for that. If you are not concentrated enough, then how will you able to cover the lecture? If you feel like that, sir, I am having concentration of only 30 minutes, then how will you sit in the examination for 3 hours? How will you sit in the examination for 3 hours? If your concentration only have 30 minutes, and this is happening because of the reels. Okay, I'm telling you guys, if you feel like that, sir, our concentration is dropping, this is because of the reels and YouTube shorts. Because those reels and YouTube shorts will be of highly 1 minute. So now our concentration has become so much that we want everything in 1 minute only. We want that something good we should get in every second. Otherwise, I will scroll the reel. I will go to the next one. To this level, our concentration has dropped down. And this is because of the shorter content that we consume. Okay, and it will affect us like it is not affecting us as of now, but next generation will be highly affected because of this. Okay, so try consuming as less shorter content as you can, because studies cannot be done in 1 minute. It cannot be done in 30 minutes. Have you seen the length of the classes in offline? What would be the length of class? 6 hours, 7 hours, right? At least here I try to reduce it to 3 hours. If you want to study something, you should involve yourself at least for 3 hours in the lecture. Sit in a calm place, don't think about anything, only think about the content that you are studying, and make sure that at least 3 hours of concentration I should have. And this 3 hours of concentration will not build up on its own. It will take time. First 1 hour, 2 hour, and then 3 hours. This is why you can see that our previous lecture, when I recorded analog digital, at that time they used to be of 1 hour and 2 hours, because my student will start preparing from analog and digital only. Because if someone is coming in our course, we will start with network analysis, analog electronics, digital electronics, these subjects we will take. So their length of lecture is lesser. But once he moves to signal system, once he moves to EDC, so there I have increased the length of the lecture, because now he should be good enough to take his concentration to 3 hours. Okay, so that thing will build up, but you need to take your concentration at least to 3 hours, that I can sit there for 3 hours and I will be fully concentrated. Okay, so don't lose it. And it is happening because of the shorter content that we consume. So try consuming as less short content as you can. Yeah, Abel, yeah, thank you for that. Yeah, anyone can attempt tomorrow's test. यार अरविंद देखो, आप ऐसे मत करो ना कि लास्ट 2 मंथ टेस्ट सीरीज के लिए रखो। आप सिलेबस 31 दिसंबर तक कंप्लीट करो ना, बीच में टेस्ट सीरीज दो। ये मत करो कि सर नवंबर तक कंप्लीट कर लूंगा, बाकी बाकी 2 महीने में रिवीजन कर लूंगा। गलत है ये। उस 2 महीने में इतना पैनिक करोगे कुछ नहीं होगा। तो जो किया है उसको रिवाइज करो ना, रिवाइज करो, साथ में टेस्ट सीरीज भी दो। तो ये मत करो कि सर नवंबर तक कंप्लीट करना ही है मेरे को, उससे केवल फील गुड वाला फैक्टर आता है। ठीक है ना, कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो उससे क्या हो जाएगा, आप ये मानो कि टॉप 100 में जो बंदे आते हैं ना, उसमें से 70 बंदे, 100 में से 70 बंदे मैं कह रहा हूँ, उनका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होता। आउट ऑफ 70 पीपल, आउट ऑफ 100 पीपल who are getting top ranks, 70% of the people haven't even completed their syllabus. But whatever that they completed that with full concentration. Okay, so that should be there. So whatever that you complete, that should be good enough, that if from this particular subject, if anyone is asking me any problem, I would be able to solve it. So syllabus completion is not a matter of concern. Matter of concern is if you are able to retain the data that you have previously studied. If I have studied network analysis, analog electronics, digital electronics, EDC, communication, whatever that I have studied, am I able to solve the problems of the previous subject? Do I remember the concept? So syllabus completion आप एक्सटेंड कर दो, 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दो, बट ऐसा कंप्लीट करो कि सर अब सब कुछ हो गया है। ठीक है ना, तो ये मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि लास्ट में टेस्ट सीरीज दे दो। Good evening, sir. I go to 304 rank gate EC in 3rd year. Is it better to give again like by preparing in last 2 months prep?
मतलब अभी कर लो ना प्रिपरेशन. Chandrasekhar, you can start your preparation right now as well. No, you are in 4th year. Do you feel like that there is very high pressure of campus? Like course curriculum would not be of that much high pressure, no? Right? So you can start preparing right now. Why would you leave it for last 2 months? I make mistake while solving questions, so I'm like some network analysis part or some. Quark, it can improve with time. This is what I can say. It can improve with time. Okay, I think it will be improving with time. So silly mistakes will improve with time. You keep on solving as much problem as you can. It will improve with time. देखो मंडाला दिलीप, I will never give the explanation, no, that why you should come for my course or my test series. I will never give the explanation. Tomorrow you write down the paper, you will realize that why you should come for my platform. So that's why I provide everything for free on YouTube as well, right? So people ask me that, sir, that coaching institute, why I should go for your coaching institute. I would say don't go for my coaching institute. If you ask me, sir, I want to go for Academy X and I want to go for PrepFusion, can you tell me why I should go for PrepFusion? I will tell you, don't go for PrepFusion. If this is the query, okay, my only answer would be don't go for PrepFusion. If you are having this query, then I am not there to give you the answer that why you should go for my content, because I have given everything on YouTube. More than enough I have given on YouTube. I run the free trial. Test series questions also I have given on YouTube, and tomorrow I am giving the free test series as well. A lot of tests are also available for free only. So you write down the test. After that, you will say that, sir, it is not even comparable. I cannot even compare the content with the other coaching institute. Okay. So whenever people call me that, sir, your content is better, I don't feel that good. Sorry to say that, because people are appreciating me, but I don't feel like, I don't want anything to be compared. That's the bottom line. Tomorrow you will write down the test and let me know if you have seen that level of question anywhere. The questions will not be lengthy. It will be solved in 3 to 4 lines only. But things should click. And that is what GATE examination requires. Okay, so never ever ask me that why I should come for your platform. Don't come. That's it. This is the bottom line. Don't come if you have the query that why I should come. Okay. I'm not offended. I'm just telling that if you have the query, then you should go for the platform which is already existing for 10 to 15 years. Right? We just came last year only. So you might have this doubt that why I should go for this platform. So don't go, right? Which subjects, topics help in both GATE and placements? Analog, network, and digital. Yeah, Atharv, thank you for that. Yeah, Aditya, you should give GATE. You should give GATE. There is no harm in giving the GATE with 3 subjects. Yeah, signal system test series by November end. By November end, I will upload all the test series. By November end. Okay, Om? By November end. क्या हो गया भाई आज इंटरनेट को अनीश? अरे मत बता भाई, मतलब मेरे को चेंज करना पड़ेगा। क्या एयरटेल वाले फिर दे दिए क्या? हाँ, एयरटेल वाले अब नए जगह पे जाएंगे, नई जगह में जियो ही लगाएंगे भाई, एयरटेल नहीं लगाएंगे, बहुत हो गया अब इनका। नया जगह देख लिएगा वैसे? हाँ देख लिया, देख मिल लिया? नहीं रहा, बहुत एक हो गया ठीक ठाक सा है, मतलब मैं सही से ढूंढ रहा था लेकिन सही से मिल नहीं रहा, कुछ सही से कुछ मिल नहीं रहा। दिखाना भाई मेरे को, वीडियो में दिखाना जब फाइनल हो नॉर्मल जाएगा। है, नॉर्मल है, इसके जैसा ही है, यही है। अच्छा। Whenever I try to revise my class notes, I quickly feel bored as if I already know everything. Can you please guide me how to revise? Yeah, if you feel like that, you know your notes completely, then you should go for problem solving. प्रैक्टिस सॉल्विंग। Solve the questions. This used to happen with me as well. Whenever I used to revise the notes, I feel like that I already know everything, what I'm doing. So solve the problems, okay? Solve the questions. That would be good for you. Yeah, also you Can I can watch complete the communication? RPO videos. Those you can watch. Yeah, RPOIQ, that revision series also you can watch. Communication system will not be uploaded on YouTube completely. Okay, it will not come completely. Only few specific topics would come. So it will not come completely. Okay. अनीश वीडियो सोल्यूशन वाला अपलोड करेगा, कहाँ पे अपलोड करेगा? मैं ड्राइव पे कर दिया, वो जो अपलोड हो रहा है तो तुझे भेज दूंगा, ठीक है? टाइम स्टैम्प लगा तू देना बस ऐड कर, टाइम से मैं लगा दूंगा, मैं टाइम से लगा दूंगा।
मतलब तेरे वाले तो मेरे को भेज देना, तेरे वाले तेरे मेरे को भेज देना। नहीं मैं ऐड करूंगा ना अब। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ, समझ गया। बात मैं एडिट कर दूंगा, मेरे उसमें एडिट कर दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। Third, off-campus opportunities are not possible. For transient analysis, practice book you can. यार प्रैक्टिस तो यार ट्रांजेंट के अच्छे क्वेश्चन तो मिलेंगे नहीं, पीवाईक्यू वगैरह कर लो, ठीक है, प्रेफ्यूजन की टेस्ट सीरीज देख लो, वहां से कर सकते हो, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर एंड reference book if you are asking, then even in the Sadiku there are not good enough question. I would say Sadiku, but in Sadiku also there are not good enough questions. So Concept for X, transient you concept can go X, for our test और series अपने also. our test, our Prefusion test series is there, right? Unlock VLSI, that you can see. There are good questions there. Yeah. हाँ कोड बिट्स छोड़ सकते हो, प्रिपरेशन छोड़ सकते हो, प्रिपरेशन छोड़ सकते हो, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 1-to-1 नहीं होता यार, 1-to-1 कॉन्टैक्ट नहीं होता सुहास, 1-to-1 केवल वो पेड कोर्स स्टूडेंट के लिए होता है, फुल कोर्स स्टूडेंट के लिए बाकी नहीं कर सकते। कॉम्प्रिहेंसिवली कम्युनिकेशन सिस्टम यार आप बुक से ही पढ़ सकते हो, बीपी लाठी से पढ़ लो, और बीपी लाठी एक बुक हो गई, और हैकिंस की बुक है वहां से पढ़ सकते हो, डिजिटल कम्युनिकेशन, एनलो कम्युनिकेशन के लिए बीपी लाठी यूज कर लेना, रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस मैंने डाल ही रखा है यूट्यूब पे। देखता हूँ यार तनुज कुमार लास्ट में आएगा, कुछ आएगा तो एनलॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रिवीजन जैसा कुछ, रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस वगैरह है, ये लास्ट में आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। बाकी और कोई क्वेरी है तो यू गाइस कैन राइट डाउन व्हेन आई एम ट्राइंग टू मेक शॉर्ट नोट्स। या अनीश रिगार्डिंग द शॉर्ट नोट्स यू कैन आंसर। Like short notes is a very personal thing, right? So you try to attempt test series and then see which things you are forgetting in the test, which things you are not able to solve, which formula you are forgetting, so you can write those formulas in short notes. Okay, so short notes is according to your preparation. Maybe you got a good question, that concept you can write down in short, whatever you feel like you can do that. नहीं अनिकेत देखा नहीं है यार ये बुक, ये जो आपने बताया सर्किट एनालिसिस बाय हेट, ये देखा नहीं है यार, हेट की वो वाली बुक तो बढ़िया है हेट की ईएमएफटी की बुक तो बढ़िया है, ठीक है। गणेश, आप ईएमएफटी की आओगे, बुक आप बढ़िया आप ऑफलाइन आओगे? गणेश, आप आओगे ऑफलाइन? पहले ये बताओ। और 2027 में तो है बहुत टाइम सर्किट। है अभी। ऑफलाइन बैच भाई पागल बनाने का सबसे बढ़िया वे होता है, ऑफलाइन बैच और कुछ नहीं होता। व्हाई वुड नहीं इंजीनियर नीड ऑफलाइन बैच? नहीं, आप एक बार ऑफलाइन में कंटेंट देखो कैसे पढ़ाते हो, ऑनलाइन में देखो, मतलब आपको समझ में आ जाएगा क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है। ऑफलाइन में मेरे को 200 लोगों को इंप्रेस करना है, मैं कैसे ही पढ़ा दूं बताओ। या गणेश नो प्रॉब्लम, ओह नो सॉरी, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी। इट्स लेकिन गुड ऑफलाइन इफ में यू भी डोंट अंडरस्टैंड, इट्स गुड यू डोंट हाँ, अंडरस्टैंड। in offline there would be 200 people sitting in front of me, right? Do you really think that I would put that kind of effort in offline that I put in online? In online, like for every minute step I need to take care of the things, because when I say I am teaching this on a very different level, and when I'm saying that there would not be any mistake in the concept, that means I have to mean it, no? So I have to teach in that manner only. In online anyone can judge you, from a btech first year student to IIT's professor, every can judge you in the online, because it is available on the internet, and internet is accessible to everyone. So whoever is teaching in the online, he is giving his level best there, because you cannot take the risk, right? So I don't think offline coaching institute makes any sense. You travel for 1 hour, you come back, then you feel tired, you are staying away from family. How does it make sense? हाँ आयु सफिशिएंट है, गेट के लिए सफिशिएंट है वो।
अभिषेक यादव देखो, अब एमटेक से दूर भाग रहे हो ना, मतलब एमटेक नहीं करना है, लेकिन और आप कह रहे हो इंटरेस्ट वीएलएसआई में, तो नहीं है इंटरेस्ट। देखो ठीक है, आपने अभी वीएलएसआई से स्पेशलाइजेशन नहीं किया, कुछ और नहीं किया, आपका इंटरेस्ट नहीं है वीएलएसआई में, ठीक है। बुरा लग रहा होगा ये बात सुन के, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं मास्टर्स नहीं करना चाह रहा, अब सर आप कह दोगे कि सर आपने भी तो मास्टर्स नहीं की, तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ी ना वीएलएसआई में, मैं कभी नहीं कहता मेरा इंटरेस्ट वीएलएसआई में। अगर होता तो मैं जॉब कर रहा होता अभी, नहीं था ना मेरा इंटरेस्ट वीएलएसआई में। मेरा इंटरेस्ट पढ़ाने में है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। जो भी पढ़ा रहा है उसका किसी का भी इंटरेस्ट वीएलएसआई में नहीं है। जो वीएलएसआई में जॉब कर रहे हैं उसमें से 70% लोगों का इंटरेस्ट वीएलएसआई में नहीं है। जो वीएलएसआई में जॉब भाई कर तू रहे तो हैं, मैं ये पोल बता रहा हूँ, खोल रहा है, तू तो 70% तो मैं पोल कम खोल बोल रहा दिया, है यार, तू तो पोल खोल रहा है। 70% तो मैं बोल दिया, बहुत भाई कम अब ये डेटा बोल शॉर्ट्स में दिया। हो जाएगा, सकता है शायद, अब ये शॉर्ट में फेमस हो जाएगा ये शॉर्ट्स में। तो हो सकता है शायद 90% लोगों का इंटरेस्ट ना हो जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट नहीं है यार, इंटरेस्ट होता है अपना एक हेल्दी लाइफ जीने में। उसका मतलब क्या है कि काम करना पड़ेगा और पैसे कमाने पड़ेंगे। वो कैसे कमाएंगे, वो कोई ना कोई फील्ड तो चूज करना पड़ेगा। तो अपन को लगता है कि वीएलएसआई में फ्यूचर है, इसलिए अपने वो फील्ड चूज कर रहे हैं। तो अपना इंटरेस्ट हुआ लिविंग इन अ हेल्दी लाइफ, राइट। तो वो इंटरेस्ट है, और आपको स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, मास्टर्स के लिए जाना चाहिए अगर आपको अच्छा करना है इस फील्ड में, ठीक है। तो जाना चाहिए, श्योरली जाना चाहिए। Sometimes when I see a question, I know how to solve. I get over. Yeah, don't rush. Every question needs attention. Okay, so everyone is equal. If one question is giving you 1 mark, other question is giving you 2 marks, or if other question is giving you 1 mark, so basically every question has the same marks only, right? मेनली फोकस ईएसी में है, तो यार वीएलएसआई ले लो, ठीक है। ये एआई वे वगैरह मत लो, ईएसी में वीएलएसआई का सब्जेक्ट भी काम आ जाएगा, तो वीएलएसआई ले लो। ईएसी करना है आपका, ठीक है, ईएसी में आपका फोकस है, तो वीएलएसआई वगैरह ले लो। बाकी ईएसी में है तो टेक से तो वो बहुत दूर हो गया, टेक्निकल चीजों से दूर हो गया ना ईएसी। ईएसी का पेपर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड। सुहास भाई देखो, आपको हिंदी समझ में आती है तो मैं आपको आंसर दूंगा, अंग्रेजी में मैं बोल नहीं पाऊंगा। आप पढ़ाई करना चालू करो, ठीक है। एक आंसर है अभी, और कुछ नहीं करना आपको। आपने इस सेशन में मेरे ख्याल से 20 से 25 क्वेरी पूछ ली, मैं एक आंसर दूंगा, आप और कुछ पूछ लोगे। सभी क्वेरीज का एक ही आंसर है, पढ़ाई करो भाई, ठीक है। अभी सेशन बंद करो, वीडियो को डिसलाइक करो और पढ़ाई करना स्टार्ट करो। लाइक वाइक से मेरे को कोई, मेरा मन नहीं भरता इन सब से, डिसलाइक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, लेकिन अभी पढ़ाई करना स्टार्ट करो। उससे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, उससे ही आपको टीचिंग पसंद है, तो उससे ही आप बीटेक के बाद में आईआईटी एनआईटी में पढ़ा पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, पीएचडी करनी पड़ेगी, वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, फिर प्रोफेसर बनोगे। तो सबका आंसर एक ही है, पढ़ाई करनी है। वो नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप पढ़ाई करो, ठीक है। बस इतना ही आंसर है सबका का। Yeah, so again repeating, tomorrow we are having concept X, our AIMT. So everyone should attempt it, no matter whether you have completed 1 subject, 2 subject, or whatever the subject that you have completed. You should attempt that question paper. Okay, and you will get to know what is the level of preparation and where do you start. Okay, guys, I guess we can end the session now. Fine, ओके, Anish, we थैंक can यू, end the थैंक यू, session. या थैंक यू। Anish, अभी वो जीमेट पे आना है, वो वाला देख लेते हैं टेस्ट सीरीज का। आता हूँ।